जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां ते अहोरात्र विदु जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। हमारे युगों के समय का परिणाम इस प्रकार बताया गया है। कलियुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलियुग से दुना, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, कलियुग से तिगुना, सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, कलियुग से चौगुना, कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने ही युगों की एक रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिणाम बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का लोक भी सीमित तथा काल की अवधि वाला है, इसलिए वह भी अनित्य ही है। और जब वही अनित्य है तब उसके नीचे के लोक और उनमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हों, इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करना मनुष्य जीवन को प्रमाद में लगाकर उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्खता है। मनुष्य जीवन की अवधि बहुत ही थोड़ी है, अतः भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करके शीघ्र से शीघ्र उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है और इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। जो इस प्रकार समझते हैं वे ही दिन रात्रि रूप काल के तत्व को जानकर अपने अमूल्य समय की सफलता का लाभ उठाने वाले हैं। Those people who know the day of Brahma, which is of a duration of 1,000 yugas, ages, and the night, which is also of 1,000 yugas duration, they know day and night. Day means evolution or manifestation of the universe. Night means involution of the universe or pralaya. The worlds are conditional in time, therefore they return again. Brahmaloka is also transient, although it lasts for 1,000 ages, yugas. When the 4 great yugas have gone round 1,000 times, it makes a daytime of Brahma, and when an equal number of yugas passes again, it makes a night. It is said that Kali Yuga consists of 4,32,000 years, Dwapar Yuga 8,64,000 years, Treta Yuga 12,96,000 years, Satyug 17,28,000 years. Thus, Divya Yuga 43,20,000 years. The world is absorbed in Mula Prakriti during cosmic pralaya, involution of the world. Just as the tree remains in the latent state in a seed, so also this whole universe remains in a latent state in a seed form
in the Mula Prakriti during Pralaya. This is the night of Brahma. This is the cosmic night. Again, the world is projected at the beginning of the Mahakalpa, evolution. There comes the cosmic dawn or cosmic day. The manifested and the unmanifested dwell in Brahman. Brahman is beyond the manifested and unmanifested. When the world and body are destroyed, Brahman is not destroyed. The waves come out and subside, but the ocean remains unaffected. So also the worlds come and subside, but Brahman, the source of everything, the source of Mula Prakriti, ever remains unaffected. The Brahman is not in the least affected by the evolution and dissolution of the worlds and the bodies of beings. It remains always as it is. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 8, श्लोक 17. ब्रह्माचा एक दिवस ज्याचा कालावधी 1000 चतुर्युगापर्यंत असतो आणि रात्रीचाही कालावधी हा पण 1000 चतुर्युगापर्यंत असतो. जे पुरुष तत्वाजारे हे जाणतात तेच योगीजन काळाचे सार जाणणारे असे आहेत. आपल्या युगांचा कालावधी खालीलप्रमाणे वर्णन केलेला आहे. कलियुग 4,32,000 वर्षे, द्वापरयुग 8,64,000 वर्ष म्हणजेच कलियुगाच्या दुप्पट. नंबर 3 त्रेतायुग हे 12,96,000 वर्ष म्हणजेच कलियुगाच्या तिप्पट. सत्ययुग 17,28,000 वर्ष म्हणजेच कलियुगाच्या चौपट. या सगळ्यांची एकत्र बेरीज केली तर ती होते 43,20,000 वर्ष. हे एक दिव्य युग आहे. अशी 1000 युगे मिळून ब्रह्माचा एक दिवस होतो आणि तेवढीच युगे मिळून एक रात्र होते. ब्रह्माचा दिवस रात्रीच्या कालवाधीचे वर्णन करून भगवंताने हे दाखवून दिलेले आहे की ब्रह्माचे लोक देखील मर्यादित आणि काळाच्या अधीन आहे आणि म्हणूनच तेही अनित्य आहे. जर ते अनित्य असेल तर त्याच्या खालील लोकांचे आणि त्यात राहणाऱ्या जीवांच्या शरीराचे काय? म्हणूनच या जगातील आणि परलोकातील सुखामध्ये आसक्त होणे आणि ती मिळवण्याकरता धडपड करणे हा एक मूर्खपणा नाही का? निष्काळजीपणात रमून मानवी जीवन वाया घालवणे हे एक गंभीर मूर्खपणाचेच लक्षण आहे. मानवी जीवनाचा कालावधी खूप अल्प आहे. म्हणूनच प्रेमाने सतत ईश्वराचे चिंतन करणे आणि शक्य तितक्या लवकर त्याला प्राप्त करणे हेच शहाणपणाचे लक्षण आहे आणि हेच मानवी जीवनाचे यश आहे. जे हे समजून घेतात ते दिवस आणि रात्रीच्या रूपात या काळाचे सार समजून आपल्या मौल्यवान वेळेचा यशाचा लाभच घेतील. जो ब्रह्माचा दिवस आहे तो 1000 युगांचा आहे आणि रात्र ही देखील 1000 युगांची आहे हे ते जाणतात आणि ते दिवस आणि रात्र जाणतात. दिवस म्हणजे विश्वाची उत्क्रांती किंवा प्रकटीकरण. रात्र म्हणजे विश्वाचे अवनयन किंवा प्रलय. विश्व हे काळाच्या बंधनात आहे म्हणून ती पुन्हा पुन्हा परत येतात. ब्रह्मलोक देखील क्षणभंगूर आहे. जरी तो 1000 युगांचा असला तरी जेव्हा 4 महायुगे 1000 वेळा प्रदक्षिणा घालतात तेव्हा ब्रह्माचा एक दिवस होतो आणि जेव्हा तितकीच युगे पुन्हा येतात तेव्हा ती रात्र होते असे म्हटले जाते. म्हणूनच कलियुग म्हणजे 4,32,000 वर्ष, द्वापरयुग 8,64,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष आणि सतयुग
28,000 वर्ष. अशा प्रकारे दिव्य युग हे म्हणजे 43,20,000 वर्ष. ब्रह्मांडीय प्रलयाच्या म्हणजे विश्वाच्या अंतर्वलनाच्या काळात विश्व हे मूल प्रकृतीमध्ये विलीन होते. ज्याप्रमाणे वृक्ष हे बीजाच्या रूपात सुप्त अवस्थेत असते, त्याचप्रमाणे हे संपूर्ण विश्व प्रलयाच्या काळात मूल प्रकृतीमध्ये बीज रूपात सुप्त अवस्थेत राहते. ही ब्रह्माची रात्र आहे, ही ब्रह्मांडीय रात्र आहे. पुन्हा महाकल्पाच्या म्हणजे उत्क्रांतीच्या सुरुवातीला विश्वाची निर्मिती होते, तेव्हा वैश्विक पहाट किंवा वैश्विक दिवस उजाडतो. व्यक्त आणि अव्यक्त दोन्हीही ब्रह्मामध्येच वास करतात. ब्रह्म हे व्यक्त आणि अव्यक्ताच्या पलीकडे आहे. जेव्हा जग आणि शरीर नष्ट होतात तेव्हा ब्रह्म नष्ट होत नाही. ज्या प्रकारे समुद्रामध्ये लाटा येतात आणि शांत येतात, परंतु समुद्र हा अबाधित राहतो, त्याचप्रमाणे जगाची निर्मिती होते आणि ऱ्हास होतो. परंतु ब्रह्म हे जे या सर्व गोष्टींचे उगमस्थान आहे, मूल प्रकृतीचे उगमस्थान आहे, ते सदैव अबाधित राहते. जगाच्या आणि जीवांच्या शरीराची उत्क्रांती आणि विनाशाचा ब्रह्मावर किंचितही परिणाम होत नाही. ते नेहमी जसेच्या तसेच राहते. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకం 17. సహస్రయుగ పర్యంతమా హర్యద్ బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతాం తేహోరాత్రి విదో జనాః. 1000 చతుర్యుగముల అవధి గల కాలము బ్రహ్మకు ఒక పగలు, అదేవిధంగా రాత్రి కూడా 1000 చతుర్యుగముల అవధి. దీనిని పురుషతత్వములో తెలుసుకుంటారు. ఈ విషయాన్ని ఎరిగిన యోగులు కాలతత్వమును ఎరిగిన వారు. 1000 యుగాల కాలపరిమితము ఈ విధంగా చెప్పబడింది. కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరములు, ద్వాపరయుగము 8,64,000 సంవత్సరములు, అంటే కలియుగం కన్నా రెట్టింపు. త్రేతాయుగము 12,96,000 సంవత్సరములు, అంటే కలియుగానికి 3 రెట్లు. సత్యయుగము 17,28,000 సంవత్సరములు, అంటే కలియుగం కన్నా 4 రెట్లు ఎక్కువ. మొత్తము 43,20,000 సంవత్సరములు. ఇది ఒక దివ్య యుగం అంటారు దీన్ని. ఇటువంటి 1000 యుగాలు బ్రహ్మకు ఒక పగలు, మళ్ళీ అన్ని 1000 యుగాలు బ్రహ్మకు ఒక రాత్రి అవుతుంది. బ్రహ్మ యొక్క పగలు రాత్రి పరిణామం తెలియజేసి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధమైన బ్రహ్మలోకం కూడా పరిమిత కాల వ్యవధి కలదని తెలియజేస్తున్నాడు. అందుచేత ఇది కూడా అనిత్యమే. మరి ఇదే అనిత్యమైనప్పుడు దీని కింద ఉన్న లోకములు, దానిలో నివసించే ప్రాణుల శరీరాలు కూడా అనిత్యమైనవి అని చెప్పేదేముందిక అనే భావాన్ని చూపిస్తున్నాడు. అందుచేత ఇహలోక పరలోక భోగములందు ఆసక్తిని కలిగి వాటిని పొందే ప్రయత్నం చేయుట అనేది మానవ జీవితాన్ని ప్రమాదంలోకి నెట్టి వ్యర్థం గావించుకున్నట్టే. అది అత్యంత మూర్ఖత్వమే. మానవ జీవిత కాల వ్యవధి అతి తక్కువ. అందుచేత భగవాన్ని ప్రేమపూర్వకంగా నిరంతరము స్మరిస్తూ శీఘ్రాతి శీఘ్రంగా ఆయన్ను పొందుటయే తెలివైన పని. దానిలోనే మానవ జీవితం యొక్క సాఫల్యత ఉంది. ఎవరైతే దీనిని అర్థం చేసుకుంటారో వారే రాత్రి పగలు అనే కాలతత్వం తెలుసుకుని తమ అమూల్య కాలాన్ని దాని సాఫల్యత యొక్క ఫలితాన్ని పొందుతారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जना. ब्रह्मा के जे एक दिन होते से 1000 चतुर्युगी के बराबर होते आ रात से हो 1000 चतुर्युगी के बराबर होते. जे पुरुष ऐ तत्व के जाने छैत से योगी काल तत्व के बूझ वाला कहलाइत छैत. युग सबके समय परिणाम एना बताओल गेल अछि. कलयुग 4,32,000 वर्ग, द्वापर युग 8,64,000 वर्ग, कलयुग से दुगुना. त्रेता युग 12,96,000 वर्ग, कलयुग से 3 गुना. सतयुग 17,28,000 वर्ग, कलयुग से 4 गुना. कुल योग भेल
43,20,000 वर्ग के। ई एकटा दिव्य युग कहलाइत अछि। एहन 1000 दिव्य युग मिलकर ब्रह्मा के एक दिन बनबैत अछि आ एतबे 1000 युग हुनकर एकटा राति होइत छनि। ब्रह्मा के दिन राति के परिमाण बता कऽ भगवान ई भाव बुझेलखिन जे ब्रह्मलोक सेहो सीमित अछि आ काल के अधीन अछि, तेँ ओहो अनित्य अछि। जखन ब्रह्मलोके अनित्य अछि तखन ओकरा नीचा के लोक आ ओहिमे रहऽ वाला प्राणी सबके शरीर अनित्य हैत, एहिमे कोनो संदेह नहि। एहि कारण एहि लोक आ परलोक के भोग सबमे आसक्त भऽ कऽ आ ओकर प्राप्ति के प्रयास केनाइ आ मनुष्य जीवन के प्रमाद में गमा कऽ व्यर्थ नष्ट कऽ देनाइ ई बड़ भारी मूर्खता अछि। मनुष्य जीवन के अवधि बड़ कम अछि, तैँ भगवान के प्रेम पूर्वक सदिखन चिंतन कऽ कऽ शीघ्रातिशीघ्र हुनका प्राप्त कऽ लेनाइ बुद्धिमानी अछि आ एहिमे मनुष्य जन्म के सफलता अछि। जे एहन बुझैत छथि से दिन राति रूप काल के तत्व के जानि कऽ अपन अमूल्य समय के नीक जकाँ उपयोग करैत छथि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।